विद्यारम्भे ये च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिवसिद्ध्यार्थं पूजितो यशुरासुरैः सर्वविघ्नहरे तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्तु भगवान् मङ्गलाय तनोहरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दिवरश्यामो हृदयस्तु जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थधनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानिति मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परुपासते तेषां नित्यविभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनं विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवां वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरो भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती वृणं माधव सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इति स्वस्ति प्रार्थना। प्रथम गणपति ध्यानम्। हरिः ओं ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति गसनः ससदशकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं भगवते श्री गौरीगणेशाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि आसनार्थे अक्षतानि समर्पयामि गं गणपतये नमः। पादर्पाद्यं समर्पयामि। ओं गं गणपतये नमः। पादर्पाद्यं समर्पयामि हस्तवर्गं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि गं गणपतये नमः। मिलितोपचार पंचामृत स्नानम्। ओं पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदा सोदेशे भवत्सरित पंचामृतमया नीतं पयोदधिकृतं मदो शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां गं गणपतये नमः। मिलितोपचार पंचामृत स्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ओं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालमणिबालस्तस्मिना शेताः शेताक्षोरुणस्ते रुद्राय वसुपतये कर्णाज्यामावलिप्ता रौद्रानभोरूपाः पार्जन्यः गं गणपतये नमः। भगवते श्री अंबिकायै नमः। भगवत्यै नमः। ओं गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां सुगंधिं तैलम्। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामुतः। भगवते गं गणपतये नमः। सुगंधिं तैलानि समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रम्। ओं ब्रह्माजज्ञानं प्रथमं पुरस्तादशिमतः सुरुचो वेनावः सबुज्ञा उपमाश्विष्टाः सतस्योनिमसतस्व वैवः ब्रह्मसूत्राय नमः। ओं सुजातो ज्योतिका सहसर्मवरुथ सामसततसो भास्वग्निविश्वरूपगुं सम्यस्य विभावसोः उपवस्त्राणि समर्पयामि चन्दनानुलेपनम्।
ॐ त्वां गन्धर्वाखनस्तामिन्द्रस्ता बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमराजविद्वानक्ष्मादमुच्यत श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गञ्जाड्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठां चन्दनं प्रतिगृह्यतां चन्दनानुलेपनानान्त्यक्षतान् समर्पयामि अक्षतान्ते पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् नमः 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 नमो नमः बिल्मपत्राणि समर्पयामि नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च नन्याय च दुर्वाङ्कुरानों काण्डात् काण्डात् रोहन्ति बरुहस्परिये बाणो दुर्भे प्रतनुसहस्रेण सतेन च दुर्वाङ्कुराणि समर्पयामि धूपम् आग्रपयामि ॐ धूरसि धुर्वधुर्वन्तं धुर्वतं जोस्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामसि वनितमघोंसस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रपयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भगवते श्रीगं गणपतये नमः चन्द्रमा मनसो यादक्षजोः सूर्योजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत भगवते श्रीगं गणपतये नमः धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णुर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भौमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकामकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलं समर्पयामि मुक्षुद्यार्ताम्बूलानि समर्पयामि ॐ यत्पुरुषेण विखादेवाय नमः तन्मतवसन्तो शासिदाज्यङ्ग्रेक्मैद्मः शरद्वभिः भगवते श्रीगं गणपतये नमः मुखवासनार्थताम्बूलानि समर्पयामि द्रव्यदक्षिणाम् अभावे पुष्पाणि समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीदसदाधार प्रतिविद्यां ते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः द्रव्यदक्षिणानान्ते कर्पूर आरार्तिक्यम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भगवते श्रीगं गणपतये नमः कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि भगवते गं गणपतये नमः गणेश अथर्वशीर्षेण श्री पुष्पाणि समर्पयामि ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं दत्तमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिष्यम् अववस्तातात् अवव्रस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवजोर्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्ददित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वजायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठते सर्वं जगदिदं तैलयमेषदे सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येदे त्वं भूमिरापनलो निलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मपूर्वस्वरं गणादीन् पूर्वोच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वर
स्वरपरतर अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारपूर्वं रूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्सारसान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं स्वायितां संसिः शेषगणेशविद्या गणकरिषे नित्रिद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशमधारिणं हृदयं च वरदं हस्त्रैर्बिभ्राणं शकध्वजं रक्तं लम्बोदरं स्वरूपकर्णकं रक्तवाससां रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितां भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमाच्युताम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वराः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगवते श्रीगं गणपतये नमः इति ध्यानम् अनेन पूजनेन श्री गणपति देवता प्रियंतां नमः बोलिए गणपति भगवान की। अथ वरुण देवता पूजनम् ओम वरुणस्योतं वनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनिस्तो वरुणसरितसदन्यसे वरुणसरितसदनमसे वरुणसरितसदनमासेद् ओम बं वरुणाय अपां पतये सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमः। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ दुसागरा सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रसरितस्तीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारका ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेद धर्मण अङ्गैः सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता ओं बं वरुणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ओं पादरूपाध्यम् अस्तु अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गस्नानं जलं समर्पयामि भगवते श्रीवं वरुणाय नमः। मिलितोपचार पंचामृतस्नानं पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोदशा सरस्वती तु पञ्चदा स्वदेशे भवत्सरेत सुगन्धिं तैलानि समर्पयामि भगवते श्रीसाम्ब श्रीवं वरुणाय अपां पतये नमः। सुगन्धिं तैलानि समर्पयामि जो वा सुवासावरिभीतागासौ श्रेयान् भवति जायमान तं धीरासगवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रोपवस्त्राणि रक्तसूत्रखण्डद्वयं समर्पयामि भगवते वं वरुणाय नमः। चन्दनानुलेपनम् ओं त्वां गन्धर्वाखनस्तमीन्द्रस्ताव्रियस्पतिः त्वामोखदे सोमराज विद्वानक्ष्मादमुच्यत चन्दनानुलेपनानान्ते कुङ्कुमादि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः वृषभर्यस्वाय वसचिद्भरेर्विरुदाः पारैष्णवाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां भगवते वं वरुणाय नमः 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 नमो नमः। धूपं
ओम कांडात् प्ररोहन्ति बर्हस्परे भानो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च ओम धूपमाग्रपयामि धूरस्य धुर्वधुर्वन्यं धुर्वदं ज्योत्स्मान् धुर्वतितं धुर्वजं वयं धुर्वामः देवानामस्य वह्नितम गुं स्वस्नितमं वप्रितमं दुष्टतमं देवहूतमं धूपमाग्रपयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि भगवते वं वरुणाय नमः चन्द्रमा मनसो जातक्षिजोः सूर्यजायत स्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षगुंसेष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीद सदाधारप्रतिविद्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेमः मुखवासनार्थताम्बूलानि समर्पयामि यत्पुरुषेण विखा देवायजनमतन्वत वसन्तो शासिराज्यं गृह्मैद्मः शरद्ववेः कर्पूरारर्तिक्यम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते वं वरुणाय अपाम्पतये नमः ध्यानम् ओम देवदानव संवादे मध्यमाने महोददौ उत्पन्नोऽस्य तदा कुंभ विद्रितो विष्णुना स्वयं तत्त्वये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणप्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यवसवो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतकामफलप्रदा त्वत्प्रसादामिमं यज्ञं कर्तुमिह जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देवे प्रसन्नो भव सर्वदा नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ओम बम वरुणाय अपाम्पतये नमः सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय नमो नमः अनेन पूजनेन श्री वरुण देवता प्रियंतां नमः बोलिए वरुण देव भगवान की
सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवां शङ्करं पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो समर्पयामि। पाद्यमी नमः समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि नमः पृथिव्यां पय ओषधीशो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रधिशा सन्तु मह्यम् समर्पयामि। स्नानं पञ्चामृतमयानीतं पयोदधीकृतं मधु शर्करासमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् शिवाय नमः समर्पयामि नमः गुं शयुमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलयस्थि प्रतिगृह्यताम् भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमिदया याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभ्यचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तः सर्वभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगतं शिवेन वचसा त्वा गिरिशा चावधामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत अध्यवोचदधिभक्तां प्रथमो देव्योऽभिषक अहीगश्च सर्वाञ्जम्बयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः असौ यस्थाम्रो अरुण उत बभ्रूसु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अभितो दिक्षु श्रुताः सहस्रशो वेशागुं नेदईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृदयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमभयोराट्नियोर्ज्यां यास्यते हस्त इषवः पराता भगवो वपाम् अवतत्यधनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे निशीलशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतरमेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्तु आयुधाया नाथाय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मावृत्
विश्वतः अथोय इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं शम्भवे नमः। ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्ये जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूता हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्त्रकाव्यभ्यो जिघ्घागुंसभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीशने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो शपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जेष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शतिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वव्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः स्रवाय च प्रतिस्रवाय च नमः आसुसेनाय चासुरथाय च नमः सूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिने च वरूथिने च नमो बिल्विने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दन्तुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः
श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नेप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इध्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च फेन्याय च नमः कत्याय च प्रवार्याय च नमः हिरण्याय च प्रवध्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्काय च हृत्याय च नमो लोहप्याय चोलप्याय च नमः उर्व्याय च कूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमोपगुर्मानाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो व किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमेवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहितम् पुरुषाणामेषां पशूनामाभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृतजीवसे इमागुं रुद्राय कवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा नस्तमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृदानो रुद्रोतनो मयस्कृधी क्षयद्वीराय नमः विधीमते यच्छञ्च योश्च मरुरायजे पिता तदस्यामत्तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोतमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषो मानो अश्वेश्वरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधीर्ह विश्वन्तो नमसा विधीमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्नि क्षयद्वीराय नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नस्तर्म यच्छति बर्हाः मृदा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्निव बन्धुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्विनक्तुं परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अपस्थिरा मघवद्भस्तनुष्वमीढस्तोकायतनयाय मृदयं मीढुष्टमशिवतमा शिवो नः सुमना भव वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मिन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासावीसानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुम् उपसृताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखात्सः कपद्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विपदो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृता यद्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रृगावन्तो निषङ्गिनः ये तावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो फरशमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृदयन्तु ते यं द्विस्मो यश्च नो द्वे स्थितं वोचं भेदधामि
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु य ओषधीशूरो युद्रो विश्वाभुवनाभिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सो मनसायं रुद्रं नमो भेर्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभे सजो यगं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेना आप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि सदाशिवोम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ निधनपतये नमः निधनपतान्तकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्थापयति पानिमन्त्रं पवित्रं सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशान सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॐ नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकाय पतय उमापतये पशुपतये नमो नमः महादेव गं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर प्रपथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनादवृन्दा सूर्याय दक्षाभरणाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ज्येष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय
साक्षरमिदं पुण्यं यपडे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यं महाकारम् ओङ्कारममलेश्वरं परल्यां वेद्यनाथं च दाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वारणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये च केदारं घुष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं व्रातपठन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाशते नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धवाद सर्वशुद्धवाद तस्मीनास्तेता सर्वं सर्वनस्ते रुद्राय वसुदेवाय गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् श्री राधा संकीर्तन मंगलमूर्ति राम दुलारी आन पराय मैं तेरे नारे मंगलमूर्ति राम दुलारी आन पराय मैं तेरे नारे हे बजरंग बली हनुमान मारे नो करिया हे मारे नो करिया तीनों लोक तेरा उजियारा दुखियों का उनका सहारा तीनों लोक तेरा उजियारा दुखियों का उनका सहारा हे जगवंदन केसरी नंदन हे जगवंदन केसरी नंदन कष्ट रोके कृपालिया कष्ट रोके कृपालिया
भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों के तुम भाग्य विदाता दुखियों के तुम भाग्य विदाता सिया राम के काज सवारे सिया राम के काज सवारे मेरा कर उदार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार हे पवन सुत बिनती बारंबार अपरम पार है शक्ति तुम्हारी अपरम पार है शक्ति तुम्हारी तुम पर रीजे अवध बिहारी तुम पर रीजे अवध बिहारी भक्ति भाव से द्याऊं तोरे भक्ति भाव से द्याऊं तोरे कर दुखों से पार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार जपो निरंतर नौ तिहारा जपो निरंतर नौ तिहारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा राम
हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजरे राम 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 भजरे राम 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 भजरे राम 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 भजरे राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। लोक यही पर लोक यही है यही दरा और व्योम यही दरा और व्योम। यही पुरातन नारायण है यही सनातन ओम यही सनातन ओम। इससे बड़ा नहीं कोई नाम इससे बड़ा नहीं कोई काम। भजने राम 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 भजने राम 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 भजने राम 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 भजने राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे गजब के इसके खेल गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन तेल बिन बाती बिन तेल। यही सवारे सारे काम यही सवारे सारे काम। भजने राम 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 भजने राम 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 भजने राम 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 भजने राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। भीगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो।
लखन वैरी तुम पर सदा रहे हर्षाए। राम लखन वैरी तुम पर सदा रहे हर्षाए। हृदय चीर के राम सिया का, हृदय चीर के राम सिया का दर्शन दिया प्रदाय। हनुमत दर्शन दिया प्रदाय। दो कर जोर अरज हनुमंता, दो कर जोर अरज हनुमंता। कहियो प्रभु से आज हनुमत, कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज। सारे ग प प प रे ग म ध ध ग, सारे ग प प प रे ग म ध ध, सारे ग प प प रे ग म ध ध ध, सा नि सा ध नि सा नि ध नि प ध नि ध प ध म प ध प म प ग म प ग म प ग म प। केसरी नंदन हे जगवंदन, केसरी नंदन हे जगवंदन। मारुति नंदन हे दुख भंजन, मारुति नंदन हे दुख भंजन, मारुति नंदन हे दुख भंजन। बजो नाम तेरी भला तली, बजो नाम तेरी भला तली, बजो नाम तेरी भला तली, बजो नाम तेरी भला तली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महाबली महाबली जय महाबली, महाबली जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सारे सारे ग म ग म ग म प द, सारे सारे ग म ग म ग म प द, सा नि ध प म ग रे सा ग म प।
सानी दाबा मगर सगमा प सानी दाबा मगर सगमा प राम नाम है तुम ही ज्ञाता राम नाम है तुम ही ज्ञाता तुमको जो ध्याता फल बुद्धि पाता तुमको जो ध्याता फल बुद्धि पाता है मन के हनुमत कर दो बली है मन के हनुमत कर दो बली है मन के हनुमत कर दो बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली महाबली महाबली जय महाबली महाबली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Har Har Bole. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya.
बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय Om Namah Shivaya. ओम नमः शिवाय Hare हर हर बोले नमः शिवाय Om Namah शिवाय ओम नमः शिवाय हर Hare हर बोले Namah Shivaya. Vishvesham Madhavam Dhundin Dandapanim Cha Bhairavam Vande Kashim Guhyam Ganga Bhavani Manikarnika. Bole Shankar Bhagavan ki jai. Jai Sitaram everyone. This is our regular Sunday evening satsang. Exactly, I'm just seeing if you're here. So everybody's here. This is our Tuesday satsang to Hanumanji Maharaj. And because it's fallen to Shraavan, it becomes even more special. So today we're happy to have done puja and abhishekam and alankar to Bhagwanji. And now we're going to chant our usual chantings, which is the chanting to Bhagwan Sri Ram, and also Hanumanji Chalisa and Sankat Mochan Hanuman Ashtakam. So all of you will join with us as we sing together. Hanumanji Maharaj, of course, he is the Ram Das. So which means that he serves. His hands, at our temple, the hand of Hanumanji, Ram is written in his name. Hanumanji ke haath mein Ram hai. So what does this mean? It means that everything he does, all his seva that he does it for Bhagwan Sri Ram. And for that reason, Hanumanji has never been unhappy. There is no record of Hanumanji being in distress. There is no record of Hanumanji being unhappy. There is no record of him being in sorrow. He, through his seva to Bhagwan, takes away the sorrows
of everyone. So we're going to chant his prayers and sing today and ask Hanumanji's blessings to all of you. We have one devotee, one virtual sponsor today, and of course they're giving thanks and gratitude to Bhagwan Hanumanji for blessings, and they're praying for the recovery of their uncle Tarun Kumar, who is at home recovering from major surgery. And of course, who is better to pray to Hanumanji Maharaj? Nasay rog hare sab pira, japat nirantar Hanumat pira. We pray for his speedy recovery, but safe recovery. And of course, his family is praying for him, and we all pray for his recovery as well. Bole Pawan Sut Hanuman ki Jai Deen. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram, Shri Ram Ram Bharatagraj Ram Ram, Shri Ram Ram Ranakarkash Ram Ram, Shri Ram Ram Sharanam Bhav Ram Ram. Shri Ramachandra Kripalu Bhaj Man Haran Bhav Bhai Daruna Nav Kanja Lochan Kanja Mukh Kanja Pad Kanjarunam. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Kandarp Aganit Amit Chali Navneer Neeraj Sundaram Pat Peet Manahu Tarit Ruchi Shuchi Naumi Janaka Sutaram. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Bhaju Deen Bandhu Dinesh Danav Daitya Vanshani Gandanam Raghunand Anand Khand Koshal Chand Dashrath Nandanam. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Sir Mukut Kundal Tilak Charu Darayam Vibhushanam Ajanu Bhuj Sar Chapdhar Sangram Jit Kardushanam. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Iti vadati Tulsidas Shankar Shesh Muni Manoranjanam Mama Hridaya Ganjani Vas Kuru Kamadi Kardal Ganjanam. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. Bole
पवन सुत हनुमान की जय। हनुमानश्च संकचमोचन हनुमानष्टकम्. We're going to chant this Sankat Mochan Hanuman Ashtakam. And this, of course, Sankat, the Lord, by chanting these prayers and having firm belief, Hindus, we have a very unique way of connecting with Bhagwan. When we pray, when we sing and we chant, I always say that we convert a stone into God. A handless, a formless, a feetless, a mouthless, a earless phone, a earless stone we convert to Bhagwan. There is no phone that we use. That's the word I want to use. We don't use any phone to call him. We use our mind. We use our voice. We use our heart. And when we sing with our heart full of love, that connection is made to Bhagwanji. You know, funny enough that we don't have a physical connection, right? There is no plug. What is our plug? You know, when you're doing a vacuum or electrical equipment, you have to plug it into the wall to have that electricity there. But for us, our devotion is that connection, our bhakti. So today, let us chant and pray as we ask Bhagwan Hanumanji's blessings on all of you on this beautiful day and in the month of Shraavan. बोले पवन सुत हनुमान की, सिया भज रामचंद्र की। बाल समय रवि भक्षणियो तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट सो जात न तारो। देवन आनी करी बिनती, तब चार दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बस गिरी, जात महाप्रभु पंत निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। विज रूप लीवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लैन गए सिय, खोज कपीश या बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। हेरी थके तत सिंधु सबे, तब लाई सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहु शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगु, सो दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो और लक्ष्मण के तब, प्राण तजै सुत रावण मारो, लय गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सो वीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई, कब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर धारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट हारो। तब हनुमान जो बंधन काती, सो त्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत तब रावण, लय रघुनाथ पतार सिधारो, देव ही पूजी भरी विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बर देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है तारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। ओ नाम तिहारो, नाम तिहारो, नाम तिहारो, नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत हनुमान की जय। बोले बजरंगबली भगवान की जय। And now our Hanumanji Chalisa. You know, Hanumanji is very healing, he's very therapeutic. In our community, Hanumanji Maharaj, where he's known to bring happiness and comfort to so many people. Hanuman Chalisa, you know, although people don't know so many bhajans,
like to sing it, they are aware of it. But whenever there is a desire to have something, to have peace of mind, to deal with a situation, it doesn't matter if the Hanumanji Chalisa lasts 5 minutes or 7 minutes, at least while they're chanting it or listening to it, it helps to elevate those persons. We all know that. It brings so much peace to us. And Hanumanji Maharaj, as I mentioned before, always very joyful. Never complains. He's never complained about anything. Although he encountered so many stumbling blocks, I don't know, if I was serving God and faced the challenges that he did, snake want to eat out him, rakshas tie him up, lit fire on his tail. Many people will question, are we doing the right thing? Did we do the right pujas? What happens? This happens a lot when we're doing something, especially when we're doing God's work, where people always get demotivated, discouraged by a little hurdle in their life. Well, what is life without a little bit of hurdles, right? What is life without hurdles? What would life be without hurdles, ups and downs? We learn from all these things how to be tough. We learn how to be strong. Challenges make us stronger. Hurdles allow us to jump higher and to build stamina. And then sometimes when you go through these hurdles and challenges in life, and when you watch others go through smaller things, you appreciate what you've gone through, because Hanumanji Bhagwan has allowed you to build your stamina, your devotion, and your love. I know one of the things that makes his work easier, Ram kaj kinhe bina, mohi kaha bishram. Ram kaj kinhe bina, the work of Bhagwan Ram. When the work of Bhagwan Ram, he says, is left incomplete, then how can he stop? How can he rest, rather? This was the offer given to him before he went over the river. The mountain came up and says, I'll go, you can rest on me. He says, Ram kaj kinhe bina, mohi kaha vishram. How can I rest when the work of the Lord is incomplete? This is another thing as well. Those who are working in this or serving in this path, I shouldn't say work, because when you're in temple, you can never work, you're serving. Those of us who are serving in this path of Dharma, right, you will find that we put in so many long hours into our work. And sometimes you're not stopping, right? You keep going and going, something is there, there's never a break. And then you ask, what am I doing, right? And then what will happen is that unknowingly you will find, our blessings come in so many ways when we serve Bhagwan. Let us not let us not take for granted who we are today. We should never take for granted who we are, because we have worked tremendously hard to get here. Hanumanji, of course, has helped us to do that. So let's sing this Hanumanji Chalisa. Then we'll read two chopais from Sundarkand. We do Arti, and there's bhojan prepared for everyone today by Pandit Shekharji. He is a very good cook, so I'm looking forward to eating his aloo or whatever he cooks. So we chant Hanumanji Chalisa and ask the Lord, Prabhu, our dear Pitaji Tarun Kumarji, who is ill and recovering from surgery rather, we ask Bhagwanji to bless him with long life and happiness, bless his caregivers, bless his family, so that they can always be supportive to him. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Barno Raghuvar Bimal Jasu Jodayak Phalchari Buddhihin Tanu Janike सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिन लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संग। कंचन वर्ण विराज सुदेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिया भरत सम। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपर दीन। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू को आपन तेज सम्हारो। आपै तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा। पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाहि। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न डरहि। हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बल, बोलो जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंधी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्धि साखी गोदीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महाधेरा, की जय नाथ हृदय महाधेरा, की जय नाथ हृदय महाधेरा। पावन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहु सुर भूप। सिया भज रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। Two quick chaupais from Kiskindakand of the Ramayana, and we look at Hanumanji's greatness. This is very popular kand, and it talks about something very important here. मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। Everybody,
राम सिया राम जय जय राम हो जो ना गई सतयो जन सागर करही सो राम काज मति आगर राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ मोही बिलो की धरहु मन धीरा मोही बिलो की धरहु मन धीरा राम कृपा कस भयहु शरीरा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ राम सिया राम जय जय राम 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 When Bhagwan Sri Ram met Sampati, Sampati was the brother of Jatayu, and he met Sampati in the forest, and they did the Shraddh ceremony for Jatayu. And Sampati was a vulture, very powerful vulture. Once him and his brother, you know the story, him and his brother Jatayu, they were flying towards the sun, Surya Kitara. But the sun became so scorched and hot. Jatayu says, brother, let's turn back because we're going to be scorched and die. Jatayu turned back, but Sampati had a lot of pride. He was very powerful. He said, I'm going. And the sun scorched his wings and he fell on the earth. And he couldn't fly again. But he was very powerful. So he could see long distances. He met Ram Bhagwan, and when he learned about the demise of his brother, Jatayu, who died for serving Ram Bhagwan. See, we are living to serve. We're giving a little bit of time to Bhagwan. A little bit of time we give to Bhagwan. And sometimes, that's a lot. This vulture Jatayu died for serving Ram Bhagwan. He was going to rescue Mother Sita, and he gave his life. Ravan, of course, cheated in the battle and chopped his wings off. So his brother Jatayu, he said, Ram, I look across the river right now, and I see Jo Nagahi Satayo Janasagar Karayu Suram Akaj Mati Agar. Jo 100 योजन समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा. That he alone who can leap across the ocean, a distance of 800 miles, who can leap across 800 miles, and is a treasure house of wisdom, that person will be able to complete Ram Bhagwan's work. You see, there are two requirements here for going across the ocean. One, you had to be able, of course, to leap across. And the second is, you had to be devoted to Ram Bhagwan. It's a message for all of us here, that whatever you do, it is not your ability to physically do something. It is not your ability to physically do something. All of us can do things. We can paint, we can construct, we can wash, we can clean, we can mop, we can do everything. All of us can do that. Yet all of us don't do that. Right? All of us can do that for Bhagwan. We can serve our dharma. But that's the first requirement. The second is, are we devoted to the Lord who we are serving? Which means that when you're doing it, you have to do it with devotion. When you do work with devotion, that work becomes seva. It is no longer a chore that you're doing. When the people are cutting the grass outside and they do it with love, that cutting of the grass becomes seva. When a song is sung with love, that song becomes a bhajan.
Just like work becomes seva when it is done with love for God, that song, when it is sung with devotion, becomes a bhajan, right? When you're speaking and you speak with love for God, that speech becomes a prayer. It becomes a prayer. These hands that you use to serve, you see Hanumanji's hand, Ram inside. When Ram is in that hand, or the purpose of Ram is served when using that hand is not your hand anymore. That hand becomes an offering. Your hand, not a flower or a rot or a banana, your hand becomes a prasad to Bhagwanji. Your hands become blessed. This was the requirement, Sampati says. Prabhu, too. They have to be able to physically do it, but they must be devoted to the feet of Ram Bhagwan as well. And so, what are they going to do now? They are going to ask. Sampati says, Paap hi ja kar Ram sumarahi, ati apar bhav sagar tarahi, tasu doot tum nij kadrau, Ram hriday dhari karahun apaun. पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनको दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो. Sampati says that even sinners who take Ram Bhagwan's name, they're able to cross over this vast and boundless ocean. Sinners can cross. Imagine all of us devoted people. If sinners can cross this vast ocean of mundane existence, you are all his messenger. Give up this cowardice. Give up this weakness and take Ram in your heart. Ram hriday dhari karahu apahi. Give up your cowardice. Atha kayarta chorkar Shri Ram ji ko hriday mein dharan karke upay kare. Put the image of Ram in your heart and you will see how brave all of you will become. Now they all started to talk. Jamawant, the big bear, when there's something to do, the plan is made now. Everybody wants to do something, right? We want this, we want that, we want that. Good, very nice. This is what we want to do. Next, who is going to do it? Who is going to do it? Everyone has an opinion, and if you're not agreeing with that opinion, you're in a lot of trouble. I can tell you that leading a community, this is always problems. We encounter this all the time. Everyone has an opinion on what happens when you don't listen to that opinion. We must understand that if you have an opinion, not everybody's opinion must become a reality, right? You have an idea. It doesn't mean, now you may have the best idea, but the person who you're giving your idea to have 100 other ideas to listen to, right? You have an opinion, you give your opinion, the person who you're giving it to has 1,000 more opinions plus yours. If we have to listen to every opinion and every idea that comes from people, what are we going to do? We're going to live, dream, and sleep and wake up back just thinking about how to fulfill all of these things, right? We have to be reasonable, right? So the work is designed to be done now. Who is going to do the work? Ram Bhagwan says, come everybody, let's talk about who can go. Jav jarath bhayahu ab kahiyo richesa, nahi tan raha pratam bal lesa. Jaman, come. Jaman says, well, I am now too old. And I only have a fraction of my strength. I have a fraction of my strength. I can't, do this work. And that is why, my friends, don't wait until you're old to go do Bhagwan work. Don't wait until you're old. Do it when you have the strength. Because when you're old, you may honestly want to do it, but you can't do as much as you were doing when you were young. Jaman says, I'm too old, I just have a fraction of my strength. When I was young, he was a very powerful bear, Jamwant. And the bears and the monkeys all stood up to serve Ram Bhagwan. Then the other one came as well. Many of them came there. Angad came. Angad says, Prabhu,
भूमिका play the harmonium. अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा. अंगद says, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौट के समय के हृदय में कुछ संदेह नहीं है. Angad says, well, you know, I can go across, but I'm not sure about returning. I don't have the power to return. That's like saying, you know, I'm taking a road trip to Florida with my car. I know the car can carry me, but I don't think he can bring me back. So it's not wise to do that. It's not wise. That's a one-way trip. Well, they all talk about who can go and who can't go, and everybody has an excuse. They're old, foot and knee, and so on. Everybody has an excuse. Well, what happened? Jamavant now looked at Hanumanji, and when he looked at Hanumanji, kahi reach pati suno Hanumana, ka chup sadhi rahe balvana. पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई. राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. कहो रीच पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना. Then Jamavant turned to Hanuman and says, mighty Hanuman, how come you are so quiet? You are the son of the wind god. You are strong as your father. You are a treasure of discretion. You possess the qualities to go, and you also are a lover of Ram. Kavan so kaj katin jagamahi, jo nahi hot tat tum pai. That Ram, Hanuman, no task in this world is difficult for you to accomplish. No task. This is Tulsidasi. Kavana so kaj katin jagamahi. Nothing in this world is difficult for you to accomplish. You know why people pray and love Hanumanji so much? Especially in difficulty, because of this. Kavana sokaj katina jagamahi jo jagahoi tat. If no task is impossible for him to complete in this world, then we should have a lot of faith in Hanumanji. Because he will find ways as well to make our work easy. Right? Have you ever find sometimes that you're trying your best to find a solution for a problem, but no matter how many doors you're opening, you're finding there's a wall there. And then you open another door and there's another wall, and you open another door and there's another wall there. We've seen that so many personally, community-wise, wherever it is, these things, they are there. And you find you're not making progress. And then you question your religion, you question your faith, you don't know what to do anymore. Well, please don't forget Hanumanji, that he is the one, nothing is impossible for him to complete. Nothing is impossible. Rama kaj lagi tav avatara. Hanumanji, you were born, you came into this world rather, for the purpose of serving Ram Bhagavan. Why are you so quiet? You are the one who can fulfill this. When Hanumanji heard these words, that Rama kaj lagi tav avatara, sunata hi bhayahu parvatakara. Hanumanji, he felt so happy, and he grew to the size, past the clouds, deep into the skies, as big as a mountain. When they looked at his size, kanak baranta tej biraja manahu apar girin kar raja. His body shone as gold, not red, gold, and bedazzled, as though another mountain, king of the mountain, just came up there. Roaring again like a lion, monkeys rolling like a lion, he says, I can playfully leap across this ocean. Bole Pavanasudha Hanuman ki jai. He
grew to the size, bigger as a mountain, than a mountain rather. Why did he only rise when somebody reminded him of that? You know, all of you, everybody here, and all of you online as well. All of us, all of us possess some sort of quality in us that we are not aware of. And they can be two things. You know, people around you, they can do two things to you. They can either remind you of all the bad things you are, the bad qualities you are, or they can remind you of the few or all the good things that you have. People around us, absolutely. 99.9999% of the time you do the good things. And they're okay, right? But the minute you do something unknowingly that is incorrect, they'll be there to remind you and highlight it that that is wrong. People around you can do two things to you. They can remind you of your mistakes, or they can remind you that you're a flower, that you're beautiful, that you're gentle, that you're nourishing, that you can add beauty to this world. Careful who you surround yourselves with, because we don't want anyone who's going to remind us of our faults. Do you want anybody to keep reminding you of your faults? Right? It just puts you down. You want people around you who can tell you, you know what, listen, you have a little faults, man, you know, things, whatever it is, but you got a lot of good things going on in you. You're brave, you're strong, you're here. And that is why Hanumanji, rose up like that, because he was reminded of the greatness in him. He was reminded of his purpose on this earth. He was reminded that Rama kaj lagi tav avatara, that Hanumanji, your purpose in this earth is to serve Bhagwan. When he was reminded of that, he sprouted up. And he says, of course, that it is time now for me to go. And what did Hanumanji says? That Asahit sahay Ravanahi mari Anayu iha trikut apari. हनुमान जी ने कहा था, और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता है. हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुझे अच्छी सीख देना. He says, I will go and kill Ravan and his whole army. I will uproot the trees and the mountains and bring them here. And they told him, no, we don't want you to go and kill Ravan. We don't want you to go uproot no mountains. All you have to go do is go see the whereabouts of Sita and come here. That is why Hanumanji is called Ram Dut. He's called Ram Dut because he is the messenger. He obeys the rules. He could have gone and bring Mother Sita. But no. That is not his place. We all have to understand. All of us have our place in life. And as long as we understand what our place is, our places are, we should act accordingly. It's not his duty to go rescue Sita Ma. It's his duty to go see the whereabouts. Ram Bhagwan's duty is to go bring Mother Sita. So what happens? He goes now, and they advise him, Etana karahu tat tum jai, Sita hi dekhi kahahu sudhi ai. जामवंत ने कहा कि हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आयो. You go and see Sita and come back with her whereabouts. And Ram Bhagwan, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल, the word bahubal is used here. You know bahubal and bahubali? The mighty armed. Bahubal, Bhagwan Ram, खेले के लिए वे बानर से के सेना के साथ लेंगे. Ram Bhagwan will go and bring her back. And that's why Hanumanji went and he saw the whereabouts of Mother Sita. Bole Pawana Sutta Hanuman ki Jai, Siya Bhaj Ramachandra ki Jai. Thank whoever is in the mandir. Thank you all for joining us. This is our little devotion to the Lord every evening here. The puja is done from 6 p.m. Panditji performs Rudra Abhishekam to Bhagwan Shivji.
And we'll do our best as often as we can to bring you katha. On Friday evening is a very important evening for us, Pradosh. Friday is Pradosh, and Pradosha is a time when we pray for Bhagwan to destroy our doshas, our enemies. Our enemies are inside, is our mind. These are the things that we need to suppress, all the negativities and the negative energies. So we need to come out and do some prayers on this day. We're doing some very special things on this day for Pradosh, and I hope you all can come join us from 6 p.m. To about 8 o'clock or so for puja. On Saturday evening is Masik Shivratri or Choti Shivratri. That is the monthly Shivratri and falls in Shraavan. So we will observe puja and abhishekam here from 7 p.m. Panditji will start, of course, puja early, but we will start abhishekam at 7 p.m. And afterwards, there is bhojan about 9 o'clock or after. There is bhojan prepared. There's a jagaran, a huge jagaran here Saturday evening. Whole Saturday night there is an Indian community. They'll be doing jagaran here Saturday. So they've invited us to start with bhojan at around 9 o'clock or so. So hope you can come and spend some time with us that evening from 7 p.m. Bole Shankar Bhagavan ki jai. And if you want to book any sessions, visit our website, bhavanishankarmandir.com/Shraavan. August 7th, which is August Monday, is a holiday. We will be here, of course, from 1 p.m. chanting the Ekadash Rudra. The Rudra will be chanted for 11 times. You can sponsor as a family. Go on our website, bhavanishankarmandir.com/Shraavan as well. We will do our Bhog now, Bhog Tayare Panditji. For those in the temple today, Bhog is prepared by Panditji. He's a very nice cook. And so he's prepared bhojan. I will eat tonight before I go. And all of you should as well. And you should take home as well. Because if you tell them to cook for 5 people, they cook for 20. So Bhagwan's blessings. Let us stand. Bhang. Avo bhog lagavo pyare Shankar. Avo bhog lagavo pyare Shankar. 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 Avo bhog lagavo pyare Shankar. Avo bhog lagavo pyare Shankar. Yani kani cha papani janmantar kritani cha tani sarvani nashyantu pradakshina. आरती कीजिए हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे. आरती कीजिए हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे. आरती कीजिए हनुमान लागे रघुनाथ लागे. आरती कीजिए हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे. जाके बल से गिरी वर गावे रोग दोष जाके निकट न जागे. अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय. आरती कीजिए हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे. आरती कीजिए हनुमान लागे दुष्ट दलन रघुनाथ लागे. देवी रघुनाथ पधारे
हनुमान लला की दुष्टदमन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्टदमन रघुनाथ कला की सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन तार कपूर दोषाई आरती करत अंजनी माई आरती की जय हनुमान लला की दुष्टदमन रघुनाथ कला की दुष्टदमन रघुनाथ कला की दुष्टदमन रघुनाथ कला की कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मनोजवर्मा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बोलिए भवानी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गणपति भगवान की, लक्ष्मी मैया की, दुर्गा मैया की, सरस्वती मात की, सत्यनारायण भगवान की, सूर्यदेव भगवान की, नवदुर्गा भवानी की, गंगा मैया की, समस्त देव विग्रहों की, सद्गुरुदेव भगवान की, संध्या शयनम आरती की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ